students, how are you? I'm fine. Myself ABHIK Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture just we are going to cover the different questions from the indefinite integral chapter for JEE main and advanced exams. Okay, so in our last videos, as so far I know that some questions were discussed also, and that were very important, and that were the previous questions also, previous year's questions. And in this lecture just we are going to cover this type of questions which which questions came in the different exams in the different previous years. Okay, so just you should solve this type of questions for the better experiencing, for the better guidance. Okay, so in this lecture, just if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Okay, so with your friends and with your relatives, with your with your surroundings. Okay, that means whoever is coming in your radius, then just contact with them and just tell them to share my channel and subscribe my channel as well. Okay, so in this video we are going to cover very important questions, and which had been collected from the different sources and from the net also. The PDF files were downloaded. Okay, so just write the first question. Just take your pen and paper, just and start. Okay, now question number 1. Integration x square minus 1 by x cube, then root 2x to the power 4 minus 2x to the power 4 minus 2x square plus 1. Okay, this is the question. Now this type of structures, it is not the regular structure, it is the irregular structure. That means there is no this particular rules for solving this type of questions. Okay, so most importantly, just how can you rearrange these questions? That is the main question. Okay, so if you want to arrange these given questions in the simplest form, okay, which will be very much useful for solving and for getting the answers as well. Just we can you can see this is the advanced level question. So x square minus 1 by x cube, okay, root over. If you take x to the power 4 as common, x to the power 4, okay, as common, then 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4. Can I write like this? Dx is there. X square minus 1 by x cube, and this x to the power 4. If this x to the power 4 term come out from the root over term, then I think this x square will be there, and in the root 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4 term is there, dx. So here you can see x square minus 1 by x to the power 5 and 1 by root 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4 dx. Okay, so if you divide x square by 5 and 1 by x to the power 5, I think x square by x to the power 5 means what? 1 by x cube minus 1 by x to the power 5 whole by root 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4. Okay, and dx is there. Now if you choose, that means if you assume 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4 as z, then I think this minus 2 x to the power minus 2 minus 1, and here minus 4 x to the power minus 4 minus 1 dx. Okay, so this will be minus 4 by x cube, and here this minus plus, and here 4 by x to the power 5 dx equals to what? Dz. So if you take 4 as common, that means 1 by x to the power 5 minus 1 by x to the power this dx equals to dz. So that means 1 by x cube minus 1 by x to the power 5 dx equals to dz by 4. Very simple, that you can see. If you substitute this denominator part
this numerator part is coming. So it is the structure actually. That means if you have just like that f dash x by fx dx, if you have that integral in this structure, then I think the answer is log mod fx plus c. Direct answer can be written. So here from this integral we can write, so log mod, so I think this is the actually root over term is also there. So just you can see dz by 4 and root z, right? 1 by 4 z to the power minus half plus 1 by minus half plus 1 plus c. Just 1 by 4. In place of z, you should put the original below. That means half minus 1, that is half. That is 2. Okay. And this 2 minus 2 by x square plus 1 by x to the power 4 whole to the power half plus c. This is the answer. Very simple. Just cancel this 2 and 4. You can cancel this out. Okay. Very simple. So that means if you want to solve this type of questions, then this type of process is very much useful. It is very much useful that you can follow this process. This is the normal question. So just write the next question. Next question, dx by okay dx by x to the power 4 plus 5x square plus 1, dx by x to the power 4 plus 5x square plus 1, dx by x to the power 4 plus 5x square plus 1. This is the question. Okay. So just remember this thing. If you have any biquadratic formation in the denominator part, okay, then you have one expression, you have one formula also. Just you can see x square plus lambda x plus 1 by x to the power 4 plus lambda x square plus 1 dx. If you have this type of expressions, that means in the denominator part x to the power 4 expressions will be there. If you have this type of expressions, then you can rearrange this whole question in the form like x plus 1 by x whole square or x minus 1 by x whole square. These two formations are there. And after that, x plus 1 by x equals to z should be substituted, and x or x minus 1 by x equals to z should be substituted. Just see the structure and see the steps, how it can be done. Okay. Now, just see. According to the structure, x square formation should be there in the numerator part, but x square formation is not there, right? Now, just we are trying to bring the x square formation, that is quadratic formation, in the numerator part. How? Just see. 2x to the power 4 plus 5x square plus 1 dx. Half. Just see. X square plus 1 minus x square plus 1 by x to the power 4 plus 5x square plus 1 dx. So you can see half x square plus 1 by x to the power 4 plus 5x square plus 1 dx. And then another thing is x square minus 1, minus sign is common, x square minus 1, x to the power 4 plus 5x square plus 1 dx. Okay, this is the structure. Now half, if you have this type of structures, then at first, the first step, just write the first step. Okay, साइड में लिख के रखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऊपर और नीचे मुझे x स्क्वायर कॉमन लेना है, ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन लेना है, ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन लेना है, नीचे भी आपको x स्क्वायर कॉमन लेना है. That means x स्क्वायर 5 1 by x स्क्वायर, just like that dx. And here also the same thing, माइनस सेम एक ही चीज होगा, यहाँ पर ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन लो, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन लो, जस्ट टेक इट एज कॉमन. Okay, now x square 1 by 1 minus x square by x square plus 5 plus 1 by x square.
Okay, dx. X square cancel, x square cancel. Okay, now the next step is half integration 1 plus 1 by x square. Here this a square plus b square, a square plus b square, a square plus b square formula is what? A plus b whole square minus 2ab, or a minus b whole square plus 2ab. Okay, so here if you use this formula in place of this, that means x, here always remember this thing, if you have the plus term in the numerator, then you should use this formula. That means where this minus sign is included. Okay, and if you have the minus sign in the middle in the numerator, then you should use this formula where the plus sign in the middle is used. So that means in place of these two, we are using x minus 1 by x whole square plus 2 into x into 1 by x, and plus 5 you already have dx, and this middle minus, just you can see in this structure minus sign in the middle in the numerator, that means this plus formula should be used. 1 minus 1 by x square, then x plus 1 by x whole square minus 2 into x into 1 by x plus 5 dx. Half. So integration 1 plus 1 by x square by x minus 1 by x whole square plus 7 dx, minus 1 minus 1 by x square, the x plus 1 by x whole square minus plus 3 dx. So that means half in the first expression. Okay, in the first integration, I think in this integration if you substitute x minus 1 by x as z, और इसमें x plus 1 by x equals to p ले लो, z तो दोनों में नहीं ले सकता हूं, यहां पर क्या आएगा 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? minus 1 by x square. You already have this minus sign in the middle, that is minus minus plus 1 by x square dx equals to dz. Here 1 minus 1 by x square dx equals to dp. So that means the integration becomes, ऊपर क्या होगा? dz by z square plus 7, और इधर minus half dp by p square plus 3. Okay, these two different integrations are there. Now I think you can use the formula, and the formula is what? Formula, कौन सा formula use करना है? dx by s square plus x square 1 by a tan inverse x by a. ये formula use करना है, ठीक है? Just use it. Now half dz by z square plus root 7 whole square. Okay, then minus half dp by p square plus root 3 whole square. Now half tan inverse 1 by half तो है ही, 1 by root 7 भी आएगा, 1 by a tan inverse x by a, then minus half 1 by a tan inverse x by a plus c. Okay, so that means 2 root 7 tan inverse z, मतलब यहां पर फर्स्ट पार्ट में z क्या है? x minus 1 by x by root 7. One by 2 root 3 tan inverse x plus 1 by x by root 3 plus 7. This is the final answer. Okay, very simple question. Just write the steps. That means which steps are being followed here. Just you should write the all steps just in the rough. Okay, just side by side all the steps and all the things, all the concepts should be written. Okay, just remember this thing. Okay, now the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। जो भी मैं बोलता हूं आप साइड में जो है लिख के रखना है कि ये टाइप हम लोग को यूज करना है। जब ये इस टाइप का क्वेश्चन है तब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, हो गया, बिठा दो उसको। ओके, नाउ इंटीग्रेशन x plus 2 by इंटीग्रेशन x plus 2 by x square plus 3x plus 3 x square plus 3x plus 3 then root x plus 1 dx. Okay, so here you have the structure. Okay, and what type of structure? Just remember this thing. If you have ax plus b by ax square plus bx plus c, then root px plus r, just like that. That means in the denominator part, one term will be the quadratic formation and the another term which will be in the root of a term, that will be the linear form. Okay, सो जो भी टर्म रूट के अंदर रहेगा वो लिनियर फॉर्म में रहेगा और रूट के बाहर जो टर्म रहेगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में रहेगा, है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है, पी एक्स प्लस आर इसको जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये स्टेप आप लिख के रखिए। सो यहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि x plus 1 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर लेफ्ट, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू 2z dz। तो यहां पर x plus 2 है तो x plus 1 तो z स्क्वायर है, दैट मीन्स आई थिंक z स्क्वायर प्लस 1 बाय ये x प्लस, दैट मीन्स x का वैल्यू यहां पर z स्क्वायर माइनस 1 रहेगा ना, तो z स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 3 z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 और इंटू z, है कि नहीं। और यहां पर तो 2z dz आएगा, ठीक है। यहां पर तो z क्या है, कैंसिल है, तो दैट मीन्स 2 बाहर आ जाएगा। नाउ z स्क्वायर प्लस 1 बाई ये होगा z टू द पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 dz। ओके, नाउ 2 रूट z स्क्वायर प्लस 1 बाई ओके z टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर और इधर प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, और सिर्फ प्लस 1 रहेगा dz। सो देखो फिर से वही फॉर्मेशन आ गया नीचे, by quadratic formation and in the numerator part the quadratic formation. That means you have to take x square as common from the numerator as well as from the denominator part. Okay, so that means 2 z square common आएगा 1 plus 1 by z square and नीचे जो है z square common आएगा z square plus 1 by z square dz. That means z square cancel, 2 1 by 1 plus z square, and I think in this place you have the plus sign in the middle. That means you should use the minus formula. That means what formula? Z minus 1 by z whole square plus 2 into z into 1 by z plus 1 dz. Just like that. Okay, so that means 2 1 plus 1 by z square और इधर आएगा z minus 1 by z whole square plus 3 dz. Now you can substitute z minus 1 by z को आप p ले सकते हैं 1 plus 1 by z square dz equals to dp. Agree? Just like that. Okay? Same thing is happening just like your the previous questions. Okay? So 2 root ऊपर आ जाएगा dp by
p square plus 3, that means root 3 whole square. So I think 2, same 1 by a tan inverse x by a, 1 by a tan inverse x by a plus c. So here 2 by root 3 tan inverse x p, मतलब क्या, z minus 1 by z by root 3 plus c. अब z का वैल्यू क्या है, इसको हम लोगों ने z लिया था 2 by root 3 tan inverse, z मतलब क्या होगा, किसको लिया था हम लोगों ने, z x plus 1 को z स्क्वायर लिया था ना, तो यहां पर z होगा क्या, रूट x plus 1, रूट x plus 1 minus 1 by root x plus 1 by root 3 plus c. This is the answer. Okay, that means घुमा फिरा के जो है एक ही प्रोसेस के अंदर जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो हर एक क्वेश्चंस में देखो वही बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन इज देयर। ओके, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। ये तो फॉर्मेशन क्या था, रूट के अंदर लिनियर फॉर्मेशन, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। अब ऐसा एक फॉर्मेशन है, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होगा, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होगा, तब आपको क्या करना है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ये है dx बाई सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रूट के बाहर है, और रूट के अंदर जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। दैट मीन्स रूट के अंदर, रूट के बाहर, फॉर बोथ द केसेस quadratic formations will be there. So if you have this type of formations, then you have to choose x equals to 1 by z. x equals to 1 by z substitute करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। So now next question लिखो, क्या है क्वेश्चन, dx by integration dx by 1 plus x square root over 1 minus x square. Okay, so just you can see रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। देन लेट x equals to 1 by z, dx equals to minus 1 by z square dz। ठीक है, just replace all the values। dx means 1 by z square dz whole by 1 plus x square, that means 1 plus 1 by z square, रूट के अंदर भी 1 minus 1 by z square। ओके, सो dz तो है ही, सो minus 1 by z square dz, और उधर z square plus 1 by z square, और रूट के अंदर z square minus 1 by z square, राइट। ओके, नाउ एक काम यहां पर कर सकते हैं, देखो माइनस तो बाहर ले लो, 1 बाई जेड स्क्वायर dz तो आ गया, और इधर जेड स्क्वायर प्लस 1, और रूट के अंदर भी जेड स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं। ये तो जेड स्क्वायर है, रूट अगर चला जाएगा दैट मींस रूट, और ये जेड और ये जेड स्क्वायर तो है ही, ये जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर कैंसिल, राइट। So after that, I think this denominator z will go to the numerator part by using the reciprocal of that. Okay, so minus I think z dz by z square plus 1 and then root z square minus 1. Okay, so here I think z dz is there in the numerator part, and niche z square term is there, that means z square can be substituted, z square equals to p, that means 2z dz equals to dp, that means z dz equals to dp by 2, that means minus z dz, that means dp by 2 and p plus 1 and root p minus 1। okay, right, हो गया ना। सो जस्ट लाइक योर फर्स्ट फॉर्मेशन, p माइनस 1 इक्वल्स टू, और क्या है यहाँ पर q स्क्वायर ले लो,
क्यू स्क्वायर, रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसको हम लोग को क्यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है. दैट मीन्स dp इक्वल्स टू 2q dq, 2q dq. सो क्या आएगा, -1/2 तो बाहर, dp के जगह 2q dq बाई p प्लस 1, p प्लस 1 मीन्स q स्क्वायर. ठीक है, q स्क्वायर है ना, p प्लस 1, क्योंकि q स्क्वायर p का वैल्यू है q स्क्वायर प्लस 1, सॉरी q स्क्वायर प्लस 2 होगा, q स्क्वायर प्लस 2, और इधर होगा q, q कैंसिल, 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या रह जाता है, माइनस dq बाई q स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स q स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर. जस्ट now you can use the formula. Okay, now you can use the formula here. So minus 1 by a tan inverse x by a plus c. So minus 1 by √2 tan inverse q. Q means root p minus 1. Root p minus 1 by √2 plus c. अब p की जगह 1 by √2 tan inverse p. p means what? p means ये p की जगह आपको क्या पुट करना है, z स्क्वायर, रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 1 by √2 plus c. So minus 1 by √2 tan inverse z स्क्वायर ना, z का वैल्यू क्या है 1 by x, तो z स्क्वायर क्या होगा 1 by x स्क्वायर, तो दैट मींस रूट ओवर 1 by x स्क्वायर माइनस 1 by √2 प्लस c. दिस इज द आंसर. दैट मींस tan इनवर्स माइनस 1 by √2 tan इनवर्स रूट 1 by x स्क्वायर माइनस 1 होल by √2. ओके, दिस इज द आंसर. हो गया, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जो है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है. ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. नेक्स्ट इंटीग्रेशन x minus 1, इंटीग्रेशन x minus 1 by x plus 1 रूट x cube plus x square plus x, x cube plus x square plus x dx. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है. ये भी देखो एक इरेगुलर टाइप का क्वेश्चन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, रूट के अंदर, रूट के बाहर लिनियर पोलिनोमियल है. इस टाइप का तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई थ्योरी तो नहीं है, टाइप तो नहीं है. सो नाउ हाउ कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो एनी हाउ वी हैव टू रीअरेंज द गिवन क्वेश्चन एज वेल. ओके, सो दैट मीन्स हाउ कैन आई रीअरेंज दिस क्वेश्चन. जस्ट यू हैव टू फाइंड द वे इन विच दिस क्वेश्चन will be finished. That means this question will be done. Okay, that means you have to find the way. Okay, how can you find the way here? Just see. If you x minus 1 x plus 1 by x plus 1 whole square root x cube plus x square plus x dx. So that means x square minus 1 by x plus 1 whole square root x cube plus x square plus x dx. है कि नहीं? Now ऊपर अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ये a प्लस बी होल स्क्वायर
मीन्स ट्वाइस एक्स प्लस 1। रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, देखो एक्स क्यूब भी कॉमनली ले सकते हैं, एक्स भी कॉमनली ले सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन पावर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन पावर तो नहीं आना चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स वी शुड नॉट कंसिडर दिस फ्रैक्शन पावर फॉर गेटिंग द यूजफुल रिजल्ट, फॉर गेटिंग द स्मार्ट रिजल्ट। ओके, सो दैट मीन्स एक्स प्लस 1 प्लस 1 by x, right? So x square 1 by 1 minus x square, नीचे जो है x square अगर मैं कॉमन लूं 1 प्लस x कॉमन लेता हूं, x कॉमन लेने से क्या आएगा, x प्लस, that means our target is to express the denominator part in the form of x minus 1 by x or x plus 1 by x, so that we can substitute this x plus 1 by x or x minus 1 by x term, because in the numerator part that you can see 1 minus 1 by x square term is there. That means if anyhow we will get this x plus 1 by x term, x plus 1 by x term, then it can be substituted, and after substitution I think 1 minus 1 by x square term will come. So anyhow this denominator expression can be rearranged in the form of x plus 1 by x, and that's why just we are using the various steps. Okay, so here if you take x as common, then I think x plus 2 plus 1 by x, and here I think this x will come out from this root, and x plus 1 by x plus 1. Now you can see this x and x square cancelled. Now everywhere this x plus 1 by x is there. It means x plus 1 by x equals to p. It means 1 minus 1 by x square dx equals to dp, right? Now just you can see dp by this p plus 2 and this root p plus 1, just like that. So now you can see रूट के अंदर भी लिनियर फॉर्म है, रूट के बाहर भी लिनियर फॉर्म है. दैट मीन्स वॉट एवर द टर्म in the root expression, that should be substituted first. Let p plus 1 equals to, क्या लेना है, z square. So that means dp equals to 2z dz. Now use it, 2z. So 2z dz by p plus 2. P plus 2 means z square plus 1, and root p means z. Okay, z cancel. That means 2 will come out. dz by z square plus 1. That means 2 tan inverse z plus c. That means 2 tan inverse z means root over p plus 1. Root over p plus 1 plus c. Just in place of p, you should use the original value. That means p means what? This one. Root over x plus 1 by x plus 1 plus c. This is the final answer. Okay? Very interesting questions. Very useful also. Okay? So, now the next question. Next question below. हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Oh. Now, sixth question, I think. Integration. X plus 1 dx, x plus 1 dx by x bracket 1 plus x ex whole square. So, okay. Now, how can I solve this question? This is the question actually. Okay. Now I think this is the irregular type of questions.
no particular form is there, no particular steps is there. Okay, just you have to rearrange the given questions in such a way that you can actually you can get the track by which you can solve the questions as well. Okay, so just you may get the solutions after rearranging this question in your suitable form. Okay, and this form should be selected and should be chosen by you only. Okay, now here you can see xc to the power x term is there. So if you substitute xc to the power x, then I think x plus 1 into e to the power x will be there. So I think if you multiply the numerator and the denominator part by xc to the power x, then I think the problem will be sorted out little bit. Now x1 plus x e to the power x को आप z ले सकते हैं. So x e to the power x u भी होगा और ये होगा, देखो u भी होके dx equals to dz. e to the power x कॉमन आएगा, x plus 1 dx equals to dz. ओके, सो ऊपर तो है देखो dz आ गया, नीचे भी देखो z आ गया, इधर भी देखो ये z नहीं z माइनस 1 आ गया, है कि नहीं, और ये हो गया z स्क्वायर, आई थिंक, राइट. So dz by z minus 1 into z square, I think it is in the partial fraction. Partial fraction term is there, and in the partial fraction, just remember this thing: if you have one expression in the linear and another expression is quadratic in the denominator, then that means if the expression will be like that, ax square plus bx plus c by root over x minus a px square plus qx plus r. अगर ऐसा कोई expression आए, no need to consider this numerator part, just look at the denominator part as well. Just you can see in the denominator part one expression in the linear form and another expression is in the quadratic form. Then the partial formula will be used just like that: bx plus c by px square plus qx plus r. So here the same expression is there. Z square is the quadratic formation, z minus 1 is the linear formation. That means here ऐसे अलग करके लिखना पड़ेगा, 1 by z minus 1 into z square means a by z minus 1 plus bz plus c by z square. ओके, लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हो? तो एलसीएम लेंगे तो यहां पर 1 इक्वल्स टू ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इंटू जेड माइनस 1. ठीक है, तो यहां पर पहले z का वैल्यू 0 चूज कर लेते हैं. 1 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो c इंटू 0 माइनस 1 दैट इज c इक्वल्स टू माइनस 1. ये आ गया c का वैल्यू. अब z इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं. 1 पुट करने से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. दैट मीन्स a इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज a इक्वल्स टू 1. अब a और c का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकालना है, तो दैट मीन्स z equals to any value that you can choose. Okay, z equals to any value, any that means you can choose 2. That means that you can choose 2, no problem. Okay, so I think in this expression, if you choose z equals to 2, then I think 1 equals to 4a plus 2b plus c, or either 2 minus 1, that is 1. Okay, so that means a and c values already found. Just you can put the values of a and c. So 1 equals to 4, a means 1, and 2b, c means minus 1 into 1. So that is 2b equals to 1 minus 4 plus 1. That is 2 minus 4, b equals to minus 1. b equals to minus 1. That means all the values are found. Now you can substitute these values in this expression.
So from 1, just substitute. So from 1, just you can use the values as well. From 1 by z minus 1 into z square equals to a by a means what? 1 by z minus 1, and b means minus z square, c means minus 1 by z square. So now इंटीग्रेशन इसके जगह में ये होगा, है कि नहीं? देखो, ठीक है. सो इसका करना है अभी. इट मीन्स 1 बाई जेड माइनस 1 dz एक पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट होगा यहां पर माइनस कॉमन लेने से जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz. हो गया. सो ये हो जाएगा लॉग मॉड z माइनस 1, और इधर हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर लू, 1 dz माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर dz, लॉग मॉड z माइनस 1 माइनस z माइनस ये क्या होगा, z टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. log z minus 1 minus z, this minus minus plus z to the power minus 1 plus c. जस्ट z की जगह वैल्यू बिठा दो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था. ओके, x 1 प्लस x टू द पावर x है कि नहीं? तो log 1 प्लस x टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 प्लस x टू द पावर x प्लस 1 बाई 1 plus x to the power x plus c. So here log 1 cancel, x to the power x minus 1 plus x to the power x plus 1 by x to the power x plus c. So this is the final answer. Okay? Now नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज हम लोग लास्ट करेंगे. फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूट के अंदर रहेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 dx. ठीक है, हो गया. नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं? तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये भी रेगुलर टाइप का ही है. देखो सब क्वेश्चन जो है आज का जितना सारा क्वेश्चन है, देखो एक ही स्ट्रक्चर का है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर आपको ठीक तरह से याद रखना है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, दैट मींस इन व्हिच स्ट्रक्चर व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस आर बीइंग फॉलोड, दैट शुड बी रिमेंबर्ड फर्स्ट. ओके, दैट शुड बी actually that should be perceived, okay, first, and after that I think if you just put the emphasis on this, on the solvings of this type of questions, then I think all the problems or all the things will be sorted out as so much as possible. Okay, so x square common, 1 minus 1 by x square. Here x square common, 1 plus 1 by x square. Now here x will be common, here x will be common, x plus 1 by x. Yes, and in the root x square common, x square plus 1 by x square. Okay, dx. So x square 1 minus 1 by x square, x common, x plus 1 by x. वेरी गुड. यहाँ पर रूट के अंदर से x बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर फिर से फॉर्मूला यूज होगा. देखो ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, -2 into x into 1 by x. क्यों मैंने प्लस का फॉर्मूला यूज किया? बिकॉज इन द न्यूमरेटर पार्ट माइनस टर्म इज देयर. ओके, माइनस इज इन द मिडल, सो दैट्स व्हाई द प्लस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड. 1 minus x square dx by x plus 1 by x, and then root x plus 1 by x whole square minus 2.
So x plus 1 by x equals to p. That means 1 minus 1 by x square dx equals to dp. Okay, right? Now just you can see the simple one. Just dp ऊपर आएगा dp है कि नहीं, नीचे आएगा ये p p then रूट आएगा p square minus 2. Okay, है? So as I told you, if you have the linear expression and the quadratic formation in the root, then what should be chosen here? And that means how can I solve this type of questions? रूट के अंदर देखो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है और रूट के बाहर लिनियर फॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग कैसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, सो एक काम यहां पर कर सकते हैं. देखो एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर मैं पी मल्टीप्लाई करूं, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर और इधर आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर माइनस 2 है कि नहीं, डीपी. फिर उसके बाद पी स्क्वायर माइनस 2 को अगर मैं जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा, 2p dp equals to 2z dz, 2 cancel. So that means p dp, that means z dz, और नीचे क्या आएगा, p स्क्वायर, that means z स्क्वायर प्लस 2, और इधर आ जाएगा z, आई थिंक z कैंसल. That means 1 by root 2 tan inverse z by root 2 plus c. Okay, very simple. तो tan inverse z means क्या है, p square minus 2 रूट है by root 2 plus c. अब p के जगह जो आपको यूज करना है ये यूज कर दीजिए, ये p के जगह मतलब क्या यूज करना है, इसका होल स्क्वायर है कि नहीं, यूज कर दो. तो क्या आएगा आंसर, p के जगह रिप्लेस कर दो, यहाँ पर 1 by root 2 tan inverse रूट ओवर पी स्क्वायर है ना, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 बाई रूट 2 प्लस सी. उसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे रख दो. दैट मीन्स देखो आज हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व किया. इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए, मेन के लिए. ठीक है, सो जस्ट यू शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर एक्चुअली फॉर एक्सपीरियंस, द बेटर एक्सपीरियंसिंग इन द एग्जाम हॉल. Okay, just if you are solving this type of question, then I think you will get the confidence as well, and which will be very much useful for facing the different problems or different situations in the exam hall. Okay, which may be arised or may not be. Okay, that means you are supposed to solve this type of questions as so much as possible. Okay, and I think if you already solved this type of questions, then I think you might have got the experience, you might have got the confidence from the different solvings. Okay, so just continue this process, continue this enthusiasm. I think after some time, I think your confidence level and your actually this your confidence and your interest will be built up in your mind, and I think all the problems and all the questions and everything, any questions can be faced by the proper encouragement also. Okay, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. फॉर जस्ट टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड yes, just subscribe my channel and like and share my channel with the friends and with the relatives as well. Okay, and try to make my channel as successful as possible. Thank you very much. Bye. Jai Hind.